कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुकुतावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकतला रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनां तदेव शतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं ममरीकवरी भारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोद्दुरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानिकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णाय नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। भक्त सज्जन, हामीले हिजोसम्म 10औं अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज एकादश स्कन्धको मूल पाठ श्रवण गर्नेछौँ। अथ कुमारी शिव वाक्याख्य एकादशोऽध्याय। नारद उवाच अचीकरत् कुमारीयं महत्कर्म सुदुष्करं मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे पद महामुने। श्रीनारायण उवाच अथारवत कल्याणी तप परमदारुणं चिन्तयन्ति शिवं शान्तं पञ्चवक्त्रं सनातनं भुजङ्गभूषणं देवं नन्दिभृङ्गिनिसेवितं चतुर्विंशतितत्त्वैः गुणैस्त्रिभिरनवेष्टितं महासिद्धिविरष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण च चन्द्रखण्डलसद्भालं जटाजुटविराजितं चराचरदुस्सरं बालातमुद्दिश्य परं तपः पञ्चाग्नीनां च मदीयसा स्थायिनी ग्रीष्मगेरवोः हेमन्ते शिशिरे चैव शीतवार्यन्तरस्थिता व्यक्तवक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा शिरोधपसृतश्याम नीलाकलकविलुण्ठिताः जनम्बालवल्लरीपुञ्जैर्वेष्टितेव बभौ जलेः ब्रह्मरन्ध्रोद्गत श्रीमद् धूमराजिर्व्यदृश्यतः नीलिनं सेव्यमानेव मिलिन्दादिप्रसर्पिणी वर्षास्वनावृता शेते स्थण्डिले प्रीशिकान्वितेः सन्ध्ययोरुभयोस्तन्वी धूम्रपानमचीकरतं पुरन्दरपरां चिन्तां मवापाश्रुत्य तत्तपः दुर्दर्शात् दिविजये सर्वै स्पृहणीया महर्षिभिः एवं तपस्विवृत्ताया मार्षेयां दीपनन्दनः गन्तान्यब्धसहस्राणि नवराजन्यभूषणः सन्तुष्ट तपसा तस्या भगवान् पार्वतीपतिः दर्शयामास बालायै निजं रूपम् अगोचरं तद्दृष्ट्वा सहसोत्तस्थो देहप्राणमिवागतं तपकृशापि सा बाला हृष्टपुष्टा तदा भवद्भूरिवायाथपक्लिष्टा देवमीडां करियसि सा बाला वनता भूत्वा वमन्ते गिरिजापतिं मानसौरूपचारैस्तं सम्पूज्य विश्ववन्दितं तुष्टावजगतां नाथं भक्तियुक्तेन चेतसा ब्रह्मोवाच अहे शैलजावल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गैरीश शम्भो तमसोमसूर्याग्निदिव्यत्रिनेत्र मदाधार मुण्डास्तिमालिन् नमस्ते नरोऽनेकतापा विभूताङ्घ्रिपीडं परे घोरसंसारवार्धो निमग्न खलव्यालकालोग्रद्रंष्ट्राभिदष्टो विमुच्येद्भवन्तं शरण्यं प्रपन्न विभूयेन बाणं स्वकीकृतस कृमृता जीविता क्लर्कभूपालपत्नी दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य भवतराण मृत्युञ्जय प्राणनाथ महध्वंसकर्त समस्तारिहर्त सदासेवकानां भवध्वंसकर्त नमो जन्महर्त पुरा सृष्टिकर्त
त्वदीयानव प्राणनाथागहर्थ इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्तुत्वा तपस्विनी वीरराम महाभागा मेधावी तनया नृप श्रीकृष्ण उवाच तत्कृतं स्तोत्रमाकर्ण्य तपसोग्रतरेण च प्रसन्नवदनाम्भोजसुतमुवाच सदाशिव शिवोवाच वरं वरभद्रं ते अस्ति मन शिवाञ्चितं प्रसन्नोऽस्मि महाभागो मामाखिद तपस्विनी तदा कर्ण्यकुमारी महानन्द परिप्लुता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्नं सदाशिवं बालोवाच दीननाथ दया सिन्धु प्रसन्नश्चेन्ममोपरि तदा मत कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभु पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितं हृदि एवमुक्त्वा तदा रस्यै वीरराम कपरदिनं तदा कर्ण्यमहादेवो जगादमुनिकन्यकां शिव उवाच त्वया यत स्वमुखेनोक्तं तदस्तु मुनिकन्यके पञ्चकृत्वस्त्वया यस्मात् पतिसम्प्रार्थितोऽधुना तस्मात् पञ्च भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरी सुरासल सकल धर्मज्ञा साधव सतय विक्रमाः यज्वान स्वगुणख्याता सत्यसन्धा जितेन्द्रिया त्वन्मुख प्रेक्षका सर्वे राजन्या गुणशालिनः श्रीकृष्ण उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य धुर्जटेरनतिप्रियम् उवाच वनता भूत्वा बाला वाक्यविशारदा बालोवाच एवं मे गिरिजाकान्तं मास्तु लोकेति कौतुकम् एकस्या एक एवास्ति भारता नार्या सदा शिवः न दृष्टा न श्रुता क्वापि नारी एका पञ्चवर्त्रिका एकस्य पञ्चपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति त्वदीयाहं कथं शम्भो भवेयं पञ्चवर्त्रिका नैवाहरहसि वचस्त्वेवं मयि वक्तुं कृपानिधेः तवैव जायते लज्जा त्वदीयाहं यत प्रभो इत्याकर्णवचस्तस्या शङ्करप्राहतां पुनः शिव उवाच मास्तु तेऽस्मिन् भवे भीरुभव्यं तत् परजन्मनि अयोनिसम्भवा तत्र भविष्यसि तपोबलात् भर्तृजं सुखमासाद्य ततो गन्त्री परं पदं दुर्वासा मे प्रियो मूर्ति सत्वा वमतः पुरा सचेत कोपावृत शुभ्रू निर्हेदहेद भुवनत्रयं त्वया गर्भातिरेकेण ब्रह्मतेज प्रमर्दितं पुरुषोत्तमस्त्वया मासो न कृतो भगवत्प्रियः यस्मिन्नर्पितमैश्वर्यं श्रीकृष्णेनात् मनस्वकम् अहं ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यास्तपस्विन यदा देशकरा बाले तदाज्ञां को विलङ्घयेत् समासो न त्वया मूढे पूजितो लोकपूजित अतस्ते पञ्चभरतारो भविष्यन्ति द्विजात्मजेः नान्यथा भावि तद्बाले पुरुषोत्तमखण्डनाथ यो वै निन्दति तं मासं स याति घोररौरवं विपरीतं भवेत् तस्य न कदापि अन्यथा भवेत् पुरुषोत्तम भक्ता ये पुत्रपौत्रधनान्विता परत्रेह भवां सिद्धिं यास्यन्ति यान्ति च वरं वयं सर्वेऽपि गिर्वाणा पुरुषोत्तमसेविनः यस्मिन् संसेविते शीघ्रं क्रियते पुरुषोत्तम सेवनीयं कथं मासं न भजामः सुमध्यमीम् अत्युत्कटानां महदां वचो मिथ्या कथं वदः अनुनेया हि मुनय सदसद्वादवादिन वदन्नेवं नीलकण्ठ क्षिप्रमन्तर्दधे हरिचकिता सा भवद्बाला यूथभ्रष्टा मृगी यथा श्रुतोवाच शशाङ्कलेखाङ्कितभालदेशे सदाशिवे शैव दिशं प्रयाते चिन्तावबाधे
मुनिराजकन्यां हत्वा यथा वृत्रहणं मुनीशा इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये शिववाक्यं नाम एकादशोत्सवः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीश्यामनारायण हे मुकुन्द, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।